शुक्र खुदा में रज़वी हो। आला हज़रत अदीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पिला दो। सुभान अल्लाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पिला दो सलाम। Through whose consolation the weeping laughed in elation, through whose consolation the weeping smiled in elation, upon his consoling and smiling style millions of saints. सुभान अल्लाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। Just think for a moment, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह, आप ये सोचिए कि सबसे बेहतरीन स्माइल आपको किसकी नजर आती है? आपके घर में, आपकी मदरसा में, आपकी मस्जिद में। कुछ लोग होते हैं जिसकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल होती है, मुस्कुराते हैं तो दिल की कलियां खिलने लगती है। मगर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल दैट यू कैन थिंक ऑफ, मैंने तो दो स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी जिंदगी में देखी, वालिदैन को छोड़ के। वालिदैन अपने बाप, वालिदैन की जो मुस्कुराहट होती है वो लाजवाब। माँ जब मुस्कुरा के अपने बेटे के साथ हम कलाम होती है, बेटा का दिल समझता है कि क्या है। और बाप जब मुस्कुरा के कोई बात कह देता है तो बेटा बड़ा खुश हो जाता है। तो वालिदैन की मोहब्बत अपनी जगह पे, मगर दो ऐसी मैंने मुस्कुराहट देखी जिंदगी में जो लाजवाब है। एक मेरे मुर्शिद हुजूर वाकई में मुस्कुराते थे, वो हुजूर ताबिश ने यूज्ड टू स्माइल, ऐसा लगता कि आज ईद करेंगे, बहुत ही खुशी महसूस। और दूसरे मुस्कुराहट हुजूर मुहद्दिस आज भी, इवन टुडे, इफ यू सिट इन अ महफिल and Huzur Muhaddis Kabir smiles, you could see the glow of his lips. You can see the glitter and the sparkle in his eyes when he smiles. Because these personalities don't smile because they want to smile. They smile because it is the sunnah of Rasulullah. Huzur मुहद्दिस आपको जितना भी तकलीफ हो, no matter how sad you are, how difficult day you are having, but सरकार ताजुशरिया स्माइल और हुजूर मुहद्दिस कबीर स्माइल्स, तमाम गम दूर हो जाते हैं। आदमी घर से आता परेशान, वालिदा का चेहरा देखता है मुस्कुराते हुए, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। Now think for a moment. I want you to keep this in your mind. मैं चाह रहा हूँ कि ये बात आप अपने दिल में रखिए और आप सोचिए, think for a moment that you get so carried away, you are so absorbed, you are so drowned in the smile of your parents, you are so absorbed in the smile of the Allama and the Mashayikh. How were the Sahaba absorbed in the most beautiful smile in the universe? Sahaba Ikram का क्या हाल था? When they looked at the most beautiful face in the universe, ऐसे चेहरा को देखते थे जिसकी जियारत के लिए चांद और तारे सूरज नीचे आए। They used to look at that Mubarak face to make whose ziyarat the sun and the moon come to Medina. I said to you before that everywhere the sun and the moon go to give light, in Medina they come to take light. Because this is the shan of the court of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. तो हुजूर जब मुस्कुराते थे, याद है वाकया सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। सैयदतुना आयशा सिद्दीका was sewing something and the needle fell. बिल्कुल अंधेरी रात, absolutely dark night, हाथ से हाथ नजर ना आए, nothing can be found. और उस वक्त जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दे।
She is looking for the needle, she can't find it. Subhanallah. उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम enters the Hujra Mubarak. Allah. Oh Aisha, what are you looking for? Ya Rasulullah, needle has fallen. Rasul पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं. Subhanallah. What does the शायर say? कि रात रोशन हुई Allah. और सुई मिल गई. Subhanallah. रात रोशन हुई और सुई मिल गई जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे. Subhanallah. 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 Rasul पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम smiled, the entire place became bright. Subhanallah. Indeed, बेशक बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है बेशक कि रसूल पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has the most beautiful smile. Subhanallah. Not had, he has. Subhanallah. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has the most beautiful smile. Subhanallah. When Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was happy, Hmm. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो हुजूर मुस्कुराते थे. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam used to smile. Subhanallah. And when Nabi sallallahu alaihi wasallam was very happy, Allah. हुजूर जब खुश होते थे तो मुस्कुराते थे. मुस्कुराहट रहती थी हुजूर के चेहरे में. Subhanallah. But when he became very happy, then हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never laughed. कभी आवाज से हुजूर ने हंसा नहीं, कहकार से हंसा नहीं. The beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam never laughed aloud like how you go crazy laughing. When Nabi sallallahu alaihi wasallam was happy, he would smile. Subhanallah. And when Huzur sallallahu alaihi wasallam was very happy, Huzur would give a broad smile. Subhanallah. Huzur would give a broad smile. And if something was making him very happy, तो Huzur अपनी आंखों के से मीच लेते थे. Rasul sallallahu alaihi wasallam used to close his eyes like this and smile when he used to be very, very happy. Magar Huzur sallallahu alaihi wasallam never used to laugh loudly. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would smile, Allah. I Subhanallah. told you now, when Huzur used to smile, what used to happen? Even if somebody dropped something in the darkness of night, Huzur smiled and the entire place became dark. Subhanallah. Sahaba Ikram radiallahu anh says that when Rasul sallallahu alaihi wasallam used to smile, when Huzur sallallahu alaihi wasallam used to smile, Huzur के चेहरे मुबारक को देखते थे, then it used to look like white hailstones were falling from the sky. Subhanallah. इतनी खूबसूरत. Subhanallah. So beautiful the मुस्कुराहट of that of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Now tell me, कोई गम में आ जाए और वो मुस्कुराहट देख ले. Allah. Somebody comes with sadness and grief and he sees that Mubarak smile, what is that? Subhanallah. Somebody comes feeling sick and he sees that Mubarak smile, what happens? Allah. Immediately he gets taskin, Besha. he gets comfort, he gets consolation. तस्कीन का माना है सुकून देना, दिल को सुकून मिल जाना. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कोई गम, खूब गम में डूबा हुआ, खूब परेशान होके आता है और मुस्तफा जान रहमत के चेहरे अनवर को देख लेता है. Allah. He sees the holy face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He sees the smile of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What happens? दिल को फौरन तस्कीन, तसल्ली मिल जाती है. इसलिए आलात फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े. सुभानअल्लाह. जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम किया. सुभानअल्लाह. उस तबस्सुम की आदत पैदा Subhanallah. upon that beautiful habit of that smiling personality. सुभानअल्लाह. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam gave taskin and sukoon to all those who looked at him. सुभानअल्लाह. Hazrat Sayyiduna. There is a hadith from Hazrat Sayyiduna Abu Huraira. एक हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है. इमाम बैहक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको अपने किताब में रिवायत की. It is reported that Hazrat Abu Huraira रज़ियल्लाहु अन्हु said, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, आप नहीं कह रहे, जिसने देखा वो कह रहे. समझ रहे? जो अपने आंखों से देख रहे हैं सहाबा किराम, those who saw with their eyes. What is he saying? That when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would smile, then rays of noor would spread. Subhanallah. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से, सुभानअल्लाह. from the Mubarak teeth of Rasul Pak, those pearls, the most beautiful pearls in the universe. Subhanallah. उन मुबारक दंदान से, from the blessed teeth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, noor used to emanate and it used to strike the wall. Subhanallah. रसूल पाक जब मुस्कुराते थे तो आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से नूर निकल के दीवारों से टकराती थी.
It used to come out and strike the wall और पूरी जगह रोशन हो जाए just by the smile of रसूल पाक सुभान अल्लाह से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत के लायक when रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would smile, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave taskin and sukoon to the heart. सुभान अल्लाह Whoever was in the court of रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he got sukoon. And this was the beautiful character. This was the beautiful character of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कोई आपके पास आए, आजकल चेहरा ऐसा होता है कि कोई मिलने आते तो उसको देख के आदमी सोचता है हालत पे. How do you meet somebody when they come to you? How do you greet a guest when he comes to you? I'm talking about Sunni Sayyula. How do you greet them? No matter how upset you are, no matter how angry you are, but muskura. Character is very important. There was nobody who had better character than Muhammad Rasulullah. बेशक सुभान अल्लाह Rasul Akram Noori Mujassam sallallahu alaihi wasallam's character is the most unique character. आज हम लोग दूसरों से character सीखना चाह रहे हैं. ये बहुत अच्छा character वाला है. ये बहुत अच्छा example है तौबा ला इलाहा इल्लल्लाह. कुफार को देख के. Who is better character than Rasulullah? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत इतनी तस्कीन देते थे. मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुका. I told you a few days before that when उस्तुने हनाना was crying, एक दरख्त एक लकड़ी का टुकड़ा सूखा हुआ जमीन पे पड़ी हुई रो रही है. A tree trunk, and many times I repeat this narration for us to understand. That trunk, that tree was bechain, that palm tree was bechain, सूख गया था. It was lying on the ground in Masjid-e-Awliya Sharif, crying because of what? Huzur said Judai. Allah. Separated from the court of Rasulullah physically. It's crying, it's weeping. Ek darakht itna ro raha hai. Ek nahi ro rahe. It's crying so much. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam comes down from the mimbar. And he goes and he hugs it. सीने से लगाते हैं जैसे बच्चे को सीने से लगाते हैं. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave it sukoon and gave it taskin and said to it that do you want a place in Jannat? जिसकी तस्कीन से रोते हुए सोचो जरा एक दरख्त को रसूल पाक इतनी तस्कीन दे के जन्नत दिला रहे हैं. मैदान महशर में अपनी उम्मत को कितनी तस्कीन. सुभान अल्लाह. How much of sukoon रसूल पाक will give his ummah on that day of Qiyamah. We are fortunate that although there is Jahannam, we know that there is Jannat, we know that there is Jahannam. हमारे अमाल तो इतने बुरे हैं, हमारे अमाल तो इतने बुरे हैं कि किधर जाए अल्लाह जाने. हमें बस एक सहारा है मुस्तफा जाने. We only have the hope of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our amal are in this level. हमें तो छोड़िए. Leave us. हौसुल वक्त. हुजूर सैयदी व सनदी सरकार मुफ्ती आज़म whose tahajjud did not go all his life, who did not leave any sunnah or nafil all his life. That Mufti Azam radiallahu anh who's walking and talking और चलना उठना बैठना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मगर वो इनकी सारी ने and humbling himself in the court of Allah and his Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था. Don't trust your own amal. Hope that Allah will accept. ये उम्मीद रखो कि अल्लाह कबूल फरमाएगा मगर उस पे एतबार ना करो that यही इसी से मैं जन्नत में जाऊंगा. हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था. मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना. I would have gone. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saved me. तब सरकार मुफ्ती आज़म का ये कहना तो हम लोगों का क्या हाल है? What will be our state? What will be our condition? रसूल अकरम नूर मुजस्सम सुरूर कल्ब व सीना ताजदार मदीना फख्र मौजूदात हज़रत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave us so much of taskin. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave us so much of hope. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did so much for us. रात में सब सो रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत अपने रब के बारगाह में रो रहे हैं. अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा. रो रो के मुस्तफा ने दरिया
रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम वो दुनिया में भी और आखिरत में। सुभान अल्लाह। आखिरत में सब रो रहे होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त रसूल पाक अपने दामन करम में हम सबको ले सुभान अल्लाह। रसूल पाक will take us in his दामन करम, सुभान and one by अल्लाह। one he will enter us into Jannah. Right at that time to जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सहाबा इकराम ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुनिए एक वाकया जल्दी से सुना देता हूँ, वक्त कम है। सहाबे रसूल हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर से बहुत मोहब्बत थी। He loved रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very much। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला एक दिन बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर। One day he presented himself in the court of the beloved Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका रंग मुतग़य्यर था। His color was different, not his normal complexion. बहुत, he was very pale. रंग मुतग़य्यर हो गया था गम की वजह से। जैसे आदमी जब बीमार होता है तो उसका कलर चेंज होता है, चेहरे का रंग बदल जाता है। तो हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु came in this condition in the court of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, very troubled, very worried. Nabi Akram Noor Mujassam sallallahu alaihi wasallam said, "Oh Sauban, hey Sauban, आज रंग क्यों बदल? Why your complexion is different today?" ये है आका कि एक बार मुस्तफा अपने गुलामों को देख के समझ लेते हैं। सुभान अल्लाह। दिलों के हाल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम looks at Sauban radiyallahu anhu, says, "What happened?" He says, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ना मैं बीमार हूँ ना मुझे कोई गम है दुनिया की। अल्लाह। तो रंग क्यों मुतग़य्यर है? या रसूलल्लाह, neither am I ill, nor do I have any grief of this dunya. The only sadness I have, मेरे एक ही गम है, जब या रसूलल्लाह आप मेरे नजरों के सामने नहीं हो और मैं आपकी जियारत नहीं कर पाता, तो मैं बहुत बेचैन हूँ। या रसूलल्लाह, when you're not in front of me and I cannot see you, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I become restless। और इस हाल में मैं आखिरत का सोचता हूँ। I think of the hereafter, कि या रसूलल्लाह, now I'm here, जब भी चाहूँ आके जियारत कर लूँ। Now I'm here, whenever I come, I can come and make your ziyarat. But या रसूलल्लाह, till I don't see you, I'm बेचैन। इतनी बेचैनी होती है कि जब तक मैं आपकी दीदार न कर लूँ। मगर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I thought, what happens on the day of Qiyamah if I will not be able to see? उनकी सोच देखिए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I thought, what if on the day of Qiyamah I will not be able to see you? Because Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will be in the heights of Jannah to the Anbiya Ikram. आप तो अंबिया वाली जन्नत में हो, very high level Ya Rasulullah, the highest with all the Anbiya Ikram alayhi salam. अगर मैं जन्नत में आ भी गया, साहबी तो जन्नती है। But this is his इंकिसारी कि अपने अमल पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की रहमत पे। He said, अगर मैं जन्नत में दाखिल भी हो गया, even if I enter जन्नत, then I would be in some other level, किसी और तबका में मैं होगा। या रसूलल्लाह, अंबिया वाले तबका में तो हम लोग होंगे नहीं। या रसूलल्लाह, मैं सोच के परेशान हूँ कि आपकी जियारत कैसे करूँगा। या रसूलल्लाह, I'm thinking, how will I be able to see you? और या रसूलल्लाह, मैं डर रहा हूँ कि क्या हो गया अगर मैं जन्नत में ना जाऊँ। ये सहाबी, what happened if I don't go to Jannah? Then I will never see you. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मेरा क्या हाल होगा? He's saying this in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, a very same riwayat, बिल्कुल जो ये बात बोल रहे, उसकी करीब करीब हजरत सैयदना सईद इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते। In other words, many Sahaba used to feel this, that how will we get to make so much? क्योंकि यहाँ जब भी ज़ियारत की जरूरत है, मस्जिद नबवी आ गए, रसूल पाक की बारगाह में आ गए। कितने खुश नसीब लोग, हम खुश नसीब दे हुए, जब भी मालिक जन्नत को देखना है कि आ जाते बारगाह। But they are now saying that on that day, Sahaba Ikram morning, क्या होगा? What will happen on that day? When the Sahaba Ikram went on saying this, जब Sahaba Ikram ये बार बार कहते चले,
the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam directed his heart in the court of Almighty Allah. Allah. My Sahaba is saying like this. Huzur to jante hai. And the hukum, the riwayat, the wahi comes from the court of Allah. The revelation descends from the court of Allah. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Comes from the verses revealed from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says in Surah An-Nisa, verse number 69, and those who obeyed Allah and His Rasul, we will rise them on the day of Qiyamah amongst the Anbiya, the Siddiqeen, the Shuhada, and the Salihin. And what a beautiful companionship this is. यानी ये साहबा इधर गम कर रहे और वहाँ आयत नाज़िल हो रही कि घबराओ मत, तुम तो अंबिया में उठेगे, तुम तो सिद्दीकीन और शहदा में उठेगे क़यामत के दिन. Why? What is the reason for that? फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam explained this, and Huzur sallallahu alaihi wasallam said, each one of you will be with the one whom you love. Subhanallah. साहबा इकराम से फरमाया, तुम में से हर एक उसके साथ होगा जिससे तुम मोहब्बत करते. हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि जब हम लोगों ने ये बात सुनी, when we heard this word from the zuban of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, that you will be with the one whom you love. हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है, मगर मुझे रसूल पाक से मोहब्बत है, अबू बकर से मोहब्बत है, उमर से मोहब्बत है, और मुझे यकीन है कि मेरे हशर उन्हीं के साथ. Look at the Sahaba Ikram. What did Rasul Pak do? हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने सबको तस्कीन दी, मगर हुजूर अपने दिल से तस्कीन दे रहे हैं. अल्लाह ताला जो है आयत नाज़िल कर रहा है, आयत नाज़िल कर रहा है कि मेरे नबी तुझे तस्कीन दे रहा है, समझ लो कि ये रब की तरफ से. इसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम. अब ये वाकया बहुत लंबे हैं और बहुत सी बातें उसमें वक्त नहीं, वक्त हो गया इशा का. इतना आप समझ लो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to smile, then it is the most beautiful. Subhanallah. Used to give comfort to his Sahaba Ikram. The Holy Quran is telling us that you will be amongst the Nabiyyin wa Siddiqeen wa Shuhada wa Salihin. What a wonderful companion. That if you love the Nabi, you will be with the Nabi. If you love, that is why, look, Hazrat Anas radiallahu anhu ne Nabi par bas nahi kiya. Hazrat Anas said, I love Allah's Nabi and I love Abu Bakr. Subhanallah. ये कह के बहुत बड़ा हम लोगों को सबक दे कि नबी से वो मोहब्बत का दावा करे और अबू बकर उमर से दुश्मनी करे, उसका मोहब्बत जो उसकी मोहब्बत झूठी है. He has a false muhabbat. True muhabbat is to love the Nabi and to love every Sahabi. Subhanallah. Companions of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then in this dunya you will be comfortable and in the akhirah you will be comfortable. But don't think that you will get taskeen and sukoon by yourself. You will get sukoon and taskeen through Rasul Pak. And no matter how much gum you have, इससे और एक सबक के आदत की शेयर से कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम. That we can't see with our eyes Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. We don't have that ताकत. ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जलवा दिखा दे तो सुभान अल्लाह. We all get to see Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Because if you see Rasul Pak, you will only see Rasul Pak. अगर आपने ख्वाब में रसूल पाक को देखा तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, क्योंकि शैतान हुजूर का शक्ल नहीं है. शैतान cannot take the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if you go in your dream, if you see Nabi sallallahu alaihi wasallam, you have seen. मगर कभी रसूल पाक पे झूठ मत बोलो. ये मैंने देखा लोगों की आदत हो गई कि मैंने रसूल पाक ख्वाब में ये कहते हुए सुना, मैंने फलां नबी को ये कहते हुए सुना. तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद. You can see that the person is not true in his statement. It's simple. That they are saying those things which the Nabi will never say, but they are attributing towards the Nabi. Remember, if you attribute a lie towards the Nabi, you have made your tikana the fire of Jannah. जिसने रसूल पाक पे झूठ बांधा, जहन्नम उसने अपना ठिकाना. So don't make your ठिकाना जहन्नम and lie. और देखे भी तो ये जरूरी नहीं कि पब्लिसिटी करें. हाँ, कभी ये कहना पड़े ताकि लोगों को तस्कीन मिल जाए, ताकि लोगों को जो है एक तरीका मिल जाए जिससे वो समझ सके कि हाँ आका तशरीफ लाते हैं. But it is not something that is for fame and for name. This is the khas karam of Rasulullah. You get to see Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we must make dua that we see the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and we must see the Mubarak smile of Rasulullah. But today we can't see. Physically we are not able to see. But इतना तो कर सकते ना कि जब गम हो, जब परेशान हो, तो आंखें बंद कर ले और मदीना शरीफ की ज़ियारत, उम्मत हज़रा की नक्शा अपने आंखों के सामने
जारी मुबारक की जो चमकदार और रोशन नज़ारा अपने आंखों के सामने लाए। और मैं कहता हूँ कि वाकई में ये उस वक्त भी काम देगा कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए की आदत, because I have yaqeen that when you put your heart and direct your heart with full love in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मुस्तफ़ा जाने रहमत जरूर उसको जरूर नज़र करम फरमाए और तो जितनी बिगड़े हुए काम है वो सब बन जाए। अब वो ज़्यादा मैंने 3 मिनट ज़्यादा ले लिया। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। अब जो